Assalamualaikum, welcome to Kaam Kahani, the podcast for the career curious. आज हमारे साथ मौजूद हैं Farrukh Karim Khan. He is the CEO of True North Advisors, which is a financial advisory. तो आज उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं about his CFA journey, about his career in finance, about his foray into entrepreneurship. Assalamualaikum Farrukh, welcome to Kaam Kahani. Assalamualaikum, how are you, Haris? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक. It's a cold day today. Enjoy the winter finally. Finally. It's come late, but Yeah. it's here. So, Farrukh, to start things off, how is True North going? Tell me a little bit about this name. What is True North? So True North, actually, my partner recommended the name, and meaning उसकी ये है कि it's your inner calling, it's your passion, it's what you are kind of meant to do. So iski meaning basically is coming from there. Okay, it's very specific to a person as well. Har kisi ka true north will be different. So that's kind of where the name came from. Ke we felt ke we want to be pursuing our passions, pursuing our calling through the route of entrepreneurship. ठीक है. तो इसलिए हमने this is why we settled on this name rather than naming it after ourselves or something generic. So you are an advisor. This is an advisory, right? Yes. So Farrukh, True North Advisory, what exactly do you guys do? तो हमारी जो advisory firm है, it's a financial advisory firm. दो चीज़ें हैं which we do, two separate advisories. एक तो है stock market की advisory. तो अगर आपने stock market में investing करनी है तो यू हैव 3 ऑप्शंस. या तो आप खुद कर लें ब्रोकरेज अकाउंट खोल के ऑन योर ओन, या आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे दें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि यू कम टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर लाइक अस हु हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट द मार्केट्स. द अदर फैसेट ऑफ ट्रू नॉर्थ एडवाइजर्स इज़ दैट वी डू प्राइवेट मार्केट एडवाइजरी एज वेल. तो अगर आपकी कंपनी है एंड यू want to, let's say, raise money, or you want to sell your company, or you want to acquire another company, तो उसमें भी you need a financial advisor, और उसमें भी we help our clients to get whatever, their transaction done. And so what makes you guys the experts on financial advice? What makes us the experts is कि हमारी जो specific fields हैं, जैसे मैं ज़्यादा stock market की तरफ कर रहा होता हूँ, my partner looks primarily at the private markets. तो बिफोर स्टार्टिंग ट्रू नॉर्थ कोई 3.5 साल पहले हमने कोई 14-15 साल इसी फील्ड्स में काम भी किया था. सो in a bunch of companies, primarily in Pakistan and some outside. So I think that's kind of where the experience is coming from, and इसीलिए हमने between my partner and myself हमने bifurcation भी रखा हुआ है कि I look at public markets, he looks at private markets based on our strengths and our experience. ठीक है. So you're also a chartered financial analyst. You're a CFA charter holder. Tell me a little bit about that journey, because a lot of people आजकल बहुत सारे लोग CFA कर रहे हैं और attempt भी करते हैं, and it's a difficult certification qualification. Yeah. So tell us about your journey with CFA. So CFA, I mean, this is a बहुत time हो गया. I think maybe 10-12 साल. But within the financial industry, why I like the CFA degree is that rigorous degree hai. So there's a lot of study involved. You cannot clear the CFA unless you have been, you've studied the curriculum. So that rigor is required. Number 2, ye ke it's an on-the-job degree. So you don't have to leave work or, your field to do it. जैसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता उसके लिए सेल्फ स्टडी है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आई थिंक मच लाइक अ लॉट ऑफ क्वालिफिकेशंस, MBA भी है जिस तरह से, और भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग दैट कम्स विद इट. तो CFA is seen as the gold standard in finance. And आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो you are that degree is globally recognized. And I think that provides a huge advantage. So I think the signaling part is most important. And जो academic उसका material है वो भी I think बहुत strong है. But I think that's relevant है, बिल्कुल है. But nothing is more relevant than on the job learning.
in my experience. Matlab, no degree can teach you as much as the job itself teaches you. And the reason why I chose the CFA over an MBA was that I didn't want to leave work. Because I think कि वहाँ पे जितनी learning होती है वो degree में नहीं होती. And so kind of CFA combined those two things. So जब आप MBA कर रहे हो या कोई और sort of academic course कर रहे होते हैं तो you have to sort of take yourself away from your work, right? So वो वाला एक gap आ जाता होगा gaining that experience and that knowledge, right? So CFA के अंदर वो gap नहीं आता. You continue with the learning and with you continue with the learning. बस ये है कि जो आपने basically it's a 3-part exam. So I think the minimum you can complete it in is 2 years. If you pass everything consecutively. लेकिन वो बहुत मुश्किल ज़ाहिर है 2 साल होंगे आपके लिए because you have to burn the midnight oil. आपने काम के साथ साथ पढ़ाई करनी है. But ये है कि yes, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो you can go in the next day and apply it at your work as well. So it's a specialized degree for generally finance professionals जिन्होंने finance में career बनाना है. But yes, I would highly recommend it, both for its the fact that you don't have to leave work, the fact that it provides a very strong signal to potential employers, and of course for the content itself. So Pakistan में how many CFAs are there? मतलब is it approaching saturation or is there no such thing? I think I'm not sure of the actual number, Haris, कि कितने हैं. But yes, definitely over the course of my own career, मैं इस finance industry से 17 साल में हूँ. I think its trend has really increased. A lot of people have come through that. मुझे लगता ये है कि the limitation right now is actually the number of young people who will be attracted towards a career in finance. तो CFA तो आप तब करेंगे when you want to pursue a career in finance. तो I think उसकी अपने limitations हैं, where I think people are more geared towards maybe technology now and so new sectors like that. But otherwise it's a very sort of thriving community. There's a CFA Society of Pakistan as well, which is a large society. It is very active, holds regular meetups. तो and उसकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद chapters भी हैं. So yeah, it's a big community and growing as well. So you speak of technology, so now Fintech is sort of really coming up and everyone's talking about it and everyone's investing in it, and there are lots of Fintech startups as well. So how has technology and finance come together, and where is this going? Great question. I think I'm still trying to get my head around it myself as well. You're absolutely right. Fintech is not just a buzzword, it's also real. Within the Pakistani context, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि I think we're still trying to find where in Fintech we should be putting in our efforts. Because देखिए यहाँ पे एक बड़ा बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी है पाकिस्तान के अंदर. जो छोटी फिनटेक कंपनीज हैं, my perspective is that they will be much better suited to kind of work in the same ecosystem as the banks. They will probably find it very hard agar wo banks ko head on le. I have a theory on that, and the theory is that Pakistan is a very low trust society. हमारे यहाँ trust levels between people are not really there. And उसके multiple reasons हैं. We kind of all know that. But जहाँ पे भी low trust society होती है, वहाँ पे जब आप अपने sort of पैसे deposit कर रहे होते हैं कहीं पे, तो you are very very conscious कि ये क्या brand है, इसका क्या staying power है, इसकी क्या marketability है. तो अगर कोई नई company होगी, people are not going to trust it with its money in terms of deposits. ठीक है. So for a fintech, small fintech company to become a bank in this country, अगर आप देखेंगे भी तो जो बड़े banks हैं इस मुल्क में, you can count them on your fingertips. They are the only relevant players.
बाकी जो छोटे बैंक्स हैं मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन एबल टू ग्रेजुएट. फॉर दैट मैटर कोई नया बैंक भी खुले, कन्वेंशनल बैंक भी खुले, तभी उसको यही प्रॉब्लम होगी. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. एंड आई थिंक आपने ये देखा होगा कि जो छोटे बैंक्स हैं इस मुल्क में, दे हैव फाउंड इट वेरी हार्ड टू इंक्रीज एंड एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू. और इसीलिए then they get sort of absorbed in larger banking networks. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. सो आई थिंक फिनटेक में भी ये है कि जस्ट कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि यू विल बिकम अ बैंक एंड अ डिपॉजिट टेकिंग बैंक, तो वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड ट्रस्ट लेवल हमारी सोसाइटी के बहुत कम है. सो आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर दैट. जहाँ पे ज़ाहिर स्कोप बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है फॉर फिनटेक्स, आई थिंक इज़ ऑन द लेंडिंग साइड, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक बैंक्स have been generally not as active. They primarily lend to the government because they can. And I think lending side पे जो basically technology sector की एक बड़ी edge भी होती है, lending side पे you can use a lot of data to basically ascertain कि जी what kind of a credit is high-risk. अब risk minimize कर सकते हैं. हाँ, you know, so you can choose the right risk in that way. So I think वहाँ पे बहुत स्कोप है. So banks भी वो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे होंगे ना to get a lot of data and then minimize risk based on that. They do. They have started on that journey. Absolutely they have. The advantage, of course, that fintechs have is that they can be laser focused on that one thing. और banks बहुत बड़े होते हैं, बहुत bureaucracy होती है. ठीक है. So उनके लिए हाँ, they are doing 10 things at a time. तो इतना आसान नहीं है. तो for a fintech, the lending focused fintech, the advantage would be कि भाई आपकी focus ही ये है, specialization ही ये है, and at the end of the day you can kind of align with the banking system, collaborate जिस तरह से भी आपने करना है. तो वो चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा scope लगता है, because अगर आप just to reiterate कि deposit side पे color of money is very important कि जी आप किसको पैसे दे रहे हैं. But जब आप lending side पे आते हैं, let's say आप या मैं भी borrow, तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आर वी बोरोइंग फ्रॉम अ लार्ज बैंक, एज लॉन्ग एज पैसा कोई दे रहा है. हाँ, पैसा दे रहा है एट द राइट रेट ऑन द राइट टर्म्स. तो वहाँ पे आई थिंक फिनटेक्स विल मेक सेंस, मोर लेवल प्लेइंग फील्ड विद द बैंक्स. और आई थिंक वहाँ पे गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देखिए ना, बैंक्स तो यहाँ पे दे वो ऑपरेट प्राइमरीली थ्रू द ब्रांच नेटवर्क. अब आप हबीब बैंक देखेंगे, इट हैज़ 1600 ब्रांचेस ऑन ग्राउंड, फिजिकल ब्रांचेस. UBL, MCB, इनकी 1300-1400 branches and so on. So a fintech which doesn't have branches will not have the trust of the public in terms of deposits. So a low trust society में that model doesn't work. That is my opinion. And so when you speak of society, मेरे ज़हन में एक बात आती है, like everyone talks about savings all the time. You know, हमारे यहाँ savings करना चाहिए, सबको savings सिखा रहे हैं. But nobody, I mean not as many people talk about investing. तो हमारे यहाँ क्या फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, और अगर कम है तो हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? फाइनेंशियल लिटरेसी तो आई थिंक यस यू राइट, मतलब बहुत ज़्यादा कम है. आई मीन हम तो स्टॉक मार्केट में आई बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 17-18 years, तो बहुत ही महदूद, वेरी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. मोस्ट पीपल डोंट गो इन इट एट ऑल. एंड आई थिंक व्हेन यू स्पीक अबाउट इन्वेस्टिंग, आई थिंक प्राइमरीली यहाँ पे investing has the primary investment happens in real estate. तो वो सबका preferred route है of saving money. और अगर उससे कुछ बचता है तो फिर आप आगे बैंक में डाल देते हैं, या आप फिर कोई एक में 100 में से एक बंदा में भी स्टॉक्स का सोचता होगा या बिजनेस का सोचता होगा. क्या वजह है, लाइक व्हाई रियल एस्टेट? क्यों ये सारी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों रियल एस्टेट पे ज़्यादा? इज दैट ऑल्सो टू डू विद ट्रस्ट? I think so, बिल्कुल. I think trust is a major factor, because अगर आप एक piece of land भी खरीद रहे हैं तो you kind of at the back of your mind feel कि ये physically मेरी चीज़ है. And stock market का ये limitation है कि most people think कि ये trading of paper है, like it's security trading, whereas nothing could be further from the truth, because actually जब आप कोई stock खरीद रहे हैं तो you are buying a shareholding in the underlying business. तो रियल बिजनेस. तो जिस तरह से कोई आप अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज अ मीन्स बाय विच आप, जैसे स्टॉक मार्केट में 500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो यू कैन चूज बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया कि किस तरह के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना है,
and you can buy the stock of that तो और लोग किस तरह से इस चीज़ को समझ इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मेरी 500 कंपनीज हैं, मैं इसके अंदर एक हिस्सेदार बन सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली बाय अ शेयर इन दिस. मतलब हाउ कैन पीपल बी मोर अवेयर एंड नॉलेजेबल अबाउट दिस? I think basic investor education, just pay quite a few people are working now, including fintechs, is necessary. Just to kind of highlight that. उससे outreach किसकी कैसी बनती है वो important है. ज़ाहिर है platforms like podcasts like yourselves are important because through the digital model you can basically reach out to everybody, or a lot of people. You can have a wide audience. मुझे ऐसा लगता है कि ओवर टाइम दैट विल हैपन, बट आई थिंक उससे ज़्यादा जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इनफ. बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रेंथ भी है बट एक वीकनेस भी है कि स्टॉक मार्केट रोज़ खुलती है, मतलब एवरी वीकडे सुबह से लेके शाम तक इट्स ओपन. तो अगर आपको पता भी हो कि जी ये मैंने एक रियल बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, यू ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू बाय एंड सेल, जो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं होती. मतलब प्रॉपर्टी में आपने एक दफ़ा ले ली, उसको बेचना इज़ अ प्रोसेस. बिल्कुल. सिमिलरली अगर आपने अपने धंधे में या किसी दोस्त के साथ उसके बिजनेस में पैसे लगा दिए हों, तो दैट अगेन इज़ नॉट लिक्विड कि जी आप ऑन वन क्लिक उसको बेच सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि उसमें द मार्केट इज़ ओपन ऑल द टाइम, एंड दैट मीन्स इज़ के people treat it as a trading platform rather than as an investing platform. Okay, because it allows for that kind of trading to go on. Yes, matlab actually to that's a flexibility, because if you're invested in stocks, you're extremely liquid. Right. Matlab, you can have access to your money in 2 days time at any given point. But psychologically what that means is that basically आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. Fair. सो रादर देन कि जी आपने एक कंपनी का डिसाइड किया कि जी ये मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है फॉर XYZ रीजंस, इसलिए पसंद है, एंड होल्डिंग इट फॉर अ ईयर, 2 years, 3 years, यू माइट होल्ड इट फॉर अ वीक और अ डे, एंड इन दैट सेंस देन द माइंडसेट विल नेवर बी कि यार ये बिजनेस है. इट विल ऑलवेज बी कि जी ये तो एक ट्रेडिंग सिक्योरिटी. That's a good point. Yeah. अच्छा फरूख, हम बात कर रहे हैं about education, about financial literacy, for example. I mean, what's interesting about your Kaam Kahani is that you don't come from a family of investors or business people, right? Matlab, your father was a professor of English literature at the University of Karachi, and he was like a pioneer in so many things. So how did you come into this field, and how did you learn about finance? So, I mean, I think a very interesting point, not just as you mentioned my father, but even मेरी जो दोनों बहनें हैं वो भी देयर इन एकेडेमिया, वो पढ़ाती हैं. सो आई एम द ओनली वन एज सच who's kind of not in teaching. I think one thought always was that because I was conversant with numbers, मुझे numbers पसंद थे from a young age, कि that was a natural inclination कि जी फाइनेंस या अकाउंटिंग की तरफ जाना. अच्छा. एंड electives also I took O levels में, वो इकोनॉमिक्स था, अकाउंट्स था, मैथ्स में एडिशनल मैथ्स थी. तो एक तो आई थिंक वाज पर्सनल कि जी आप किस चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ को पाते हैं. But when were you exposed to it? Like when did the realization sort of dawn upon you कि अच्छा finance भी कोई field है, in numbers, if I'm good in numbers, what can I do with it? How did you learn that? I think I graduated from LUMS in 2005. So my first job, and that was not intended. At that time, I didn't know कि जी ये मुझे stock market में ही जाना है. Okay. But my first job was in a brokerage house, working in the stock market as a research analyst. Okay. Almost इत्तेफाकन. I would say so, because first job में तो यही होता है ना कि you take the job you get. Sure. In that way. So I think बिल्कुल इत्तेफाकन ही था, and उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नंबर्स एंड एनालिसिस है, दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय. तो इस फील्ड में ज़ाहिर है देयर इज़ ऑल्सो द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट
जिस तरह से टीचिंग में होता है, बिल्कुल। क्योंकि आपने चीज़ें स्टडी करनी होती हैं, आपने उसको सिफ्ट करना होता है, फिल्टर करना होता है कि जी कौन सी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, कौन सी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो आई फाउंड दैट टू बी अ नेचुरल सॉर्ट ऑफ कॉलिंग फॉर मी. और जो रिसर्च एलिमेंट होता है in brokerage and finance, just tell us a little bit more about that. कि research किस चीज़ की रिसर्च हो रही होती है? देखिए रिसर्च हर तरह की फाइनेंस जॉब में नहीं होगा, बट ये कि अगर आप स्टॉक मार्केट से स्पेसिफिक बात करें तो जो रिसर्च एनालिस्ट होता है, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस में हो या वो म्यूचुअल फंड के अंदर हो, उसको सर्टन एक सेक्टर दिया जाता है या 2 सेक्टर दिए जाते हैं कि जी आपको इस पे स्टडी करके एक्सपर्ट बनना है. तो आपने उसमें डेटा भी देखना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखने हैं, इंडस्ट्री डेटा देखना है, और लोगों की रिपोर्ट्स पढ़नी है, ताकि आपको आइडिया हो कि जी ये कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है या ये इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है. ओके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू रियलाइज कि जी मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि जी इसका क्या नफ़ा बनेगा या क्या कैश फ्लो आएगा. तो उस चीज़ के लिए पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए यू नीड टू डू द रिसर्च, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. एंड उसके अंदर उसके बाद ये कि आपने उसको देखना होता है कि जी इज़ इट अ गुड इन्वेस्टमेंट कि जी ये स्टॉक लिया जाए इस प्राइस पे जो वो ट्रेड कर रहा है. तो दैट्स प्राइमरीली द जॉब ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट. अच्छा, and what is a good investment? Just could you just shed more light on that? What is a good investment? What constitutes a really good investment? ब्लैक और वाइट आंसर नहीं है इसमें हारिस. यू नो मतलब इफ़ यू आस्क समबडी दे विल से कि जी एक कंपनी जो है, जो लेट से कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, यू नो ऑपरेट नहीं करती, बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं हैं, उसके बावजूद भी कभी वो इतनी सस्ती हो जाती है कि इट बिकम्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. इफ़ यू आस्क मी फॉर माई पर्सनल आंसर, तो मैं ये कहूँगा कि अ गुड इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली अ कंपनी विच इज़ operating in a sector where it can make good money. It is run by a strong management team, ठीक है. जो long term vision के साथ चला रही हो, और जो आपका पैसा basically long term में compound कर रही हो, मतलब year on year बढ़ा रही हो. So और अगर उसकी price stock market में reasonable है, तो to me that is the best investment, और वो आप लें और आप उसकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की जर्नी को enjoy करें एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर. द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स इज के यू डोंट हैव टू डू एनी अदर वर्क अदर देन द रिसर्च. तो काम तो knowledgeable sort of decision. जी, इट्स अ जजमेंट कॉल. आपका जजमेंट स्टॉक मार्केट में की इज जजमेंट. जजमेंट अच्छा है तो यू कैन पिक द राइट इन्वेस्टमेंट्स, एंड अगर जजमेंट सही नहीं है तो देन यू कैन बैक द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स एंड देन यू लूज मनी इन द लॉन्ग टर्म. और इसके अलावा आई वाज जस्ट रीडिंग अप अ लिटिल बिट अबाउट योर कंपनी. You were talking about value-based investments. What is that, and why is that important to you? देखिए वैल्यू बेस्ड इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं टू मेक मनी, तो यू आर लुकिंग टू गेट अ डील. इसको अगर आप स्टॉक मार्केट से हटा के एक नॉर्मल बिल्कुल ही रियल लाइफ में लेके आ जाए, तो जिस तरह से सेल्स लगते हैं on a normal, let's say, clothing store. ठीक है. कि जी कपड़े के स्टोर पे there's a sale, and whenever there's a sale, if it's a great sale and there's like कि जी buy one get one free, तो people will generally flock and go कि जी ये this is the time कि जी हमें ख़रीदना चाहिए, और आपको जितना नहीं भी चाहिए आप ले लेते हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं. So value in the stock market is the same concept. कि अगर लेट से कोई कंपनी है, हाइपोथेटिकली उसकी वर्थ 100 रुपये, और आपको वो स्टॉक मार्केट में किसी वजह से 50 रुपये की मिल रही है, लेट से हालात, मुल्क के हालात बुरे हैं जिस तरह से अभी हुआ हुआ है, इकोनॉमिकली हालात बुरे हैं, तो अगर आपको 50 रुपये की मिल रही है तो दैट्स अ वैल्यू बाय, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ गेटिंग अ कंपनी वर्थ 100 अच्छा एट 50. गुड वैल्यू फॉर मनी. गुड वैल्यू फॉर मनी. अनफॉर्चुनेटली स्टॉक्स में होता ये नहीं है. जो बेसिकली नॉर्मल जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट्स या सेल्स होती है, वो नॉर्मल में तो आई थिंक वी आर वेरी ऑल क्लियर के किस तरह से होता है. बट स्टॉक मार्केट में जो डिस्काउंट या वैल्यू आती है वो जनरली तब आती है जब हालात बहुत बुरे होते हैं. तो
people instead of buying, they're generally selling at that time. ठीक है. And I think that's been one of the challenges for people to make money in the stock market as well. कि they come in जब वैल्यू कम होती है, जब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और प्राइसेस ऊपर होती हैं, and they get out जब वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन बेसिकली हालात बहुत बुरे होते हैं, न्यूज़ बहुत बुरी होती है, you know, you kind of feel unnerved और आप कहते हो यार इससे बेहतर है कि और लॉस हो, आप निकल जाएं. जैसे पब्लिक सेंटिमेंट का बहुत ज़्यादा दखल होता है, राइट? बहुत ज़्यादा पब्लिक सेंटिमेंट, आपकी जो न्यूज़ फ्लो है, you know, and as I said, stock market is open every day, you know, तो वो आज 400 पॉइंट गिर गई, कल 200 पॉइंट गिर गई है, रोज़ आपका सेंटिमेंट उस तरह से अफेक्ट हो रहा होता है. अनलाइक दैट, अगर आप सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी को देखें तो आपने एक दफ़ा प्रॉपर्टी ले ली तो मे बी 1 in 6 months आप अपने ब्रोकर से पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या रेट है, यू नो, बट कोई रोज़ के फॉर्म में या हर मिनट तो आपको उस पर कोई कोटेशन नहीं मिल रहा होगा. तो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, चाहे डिक्टेटरशिप आए, वो आपका लैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी तो शायद वैल्यू बढ़ ही रही है. हाँ, स्टॉक में भी यही है, शायद वो जो अंडरलाइंग कंपनी है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उसकी स्टॉक प्राइस को फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज मेरे और आपके सेंटिमेंट को फ़र्क पड़ रहा है. तो अगर लेट्स से आज के दिन मैं पैनिक कर जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी हालात बुरे हैं और मुझे जो है ना स्टॉक मार्केट से निकलना है, तो व्हेन आई सेल माय स्टॉक, तो वो बेसिकली द प्राइस कैन कम डाउन एंड दैट कैन बी अ सिग्नल टू अदर पीपल कि जी शायद कोई प्रॉब्लम है. वेयर जिस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा हो. तो मतलब तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और तो सुबह को हम उठे तो हमने अखबार में पढ़ा कि यू नो लास्ट आफ्टरनून स्टॉक मार्केट फेल बाय यू नो सो मेनी पॉइंट्स, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि यार ये इज़ जस्ट अ पीस ऑफ न्यूज़, पब्लिक सेंटिमेंट चेंज हुआ है, बट फंडामेंटल्स वो कंपनी तो वैसे ही है. तो लेकिन फिर भी इतने सारे लोग क्यों अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, इतने क्यों स्टॉक्स बेच देते हैं? आई मीन आई थिंक मुझे दो चीज़ें समझ में आती हैं इसमें. एक तो ये कि ज़ाहिर है नॉट एवरी वन डज इट. मतलब अगर ऑन एनी गिवन डे स्टॉक मार्केट में एक हद तक की ट्रेडिंग होती है एंड मोस्ट पीपल डू नॉट ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज दैट द प्राइस इज सेट बाय द मार्जिनल बायर और द मार्जिनल सेलर. तो जिसने भी आज बेसिकली बेचा वो उसने प्राइस सेट कर दी सबके लिए, चाहे वो अगला जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बेच भी नहीं रहा. एंड आई थिंक नंबर 2 जो इसमें आपने बात की थी वो ये थी कि जो बहुत ही ह्यूमन इमोशंस हैं, ग्रीड और फियर के, यू नो, और ये आई थिंक मतलब हमेशा से ही ह्यूमन से यू नो वी हैव दिस इन अस, ग्रीड एंड फियर. सो दैट्स व्हाट आई वुड पुट इट डाउन टू, कि एवरीबडी इज एट सम लेवल or at least most people are at some level greedy and fearful. So the external environment affects us. In good times it makes us greedy, in bad times it makes us fearful. So smart investor has to be a little less greedy and a little less fearful also. Bilkul. I mean without being a contrarian, so you cannot make money in the market. That's my opinion. You have to be somewhat contrarian, but for the right reasons. मतलब you're not just a contrarian या आपकी अलग सोच नहीं है फ्रॉम द पब्लिक, बट आपकी थोड़ी सी अलग सोच हो और रीजनिंग और डेटा के बेसिस पे हो. मतलब कि जी अगर आपको लेट से कोई एक स्टॉक है 100 रुपये से 50 रुपये का हो गया और आपको अपनी रिसर्च के बेसिस पे वो बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी प्राइस गिर भी रही हो और लोग बेच भी रहे हो, तो इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर यू टू बाय. बट जाहिर है जस्ट बिकॉज कोई चीज़ 100 रुपये से 50 रुपये की हो गई हो और आपकी उस पर रिसर्च नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि यू शुड बी सॉर्ट ऑफ बाइंग इट. सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर आपने अपनी इंडिपेंडेंट थॉट, माइंड और रिसर्च लगा के ही पैसे बनाने होते हैं. तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ले पर्सन लाइक मी टू बिकम कन्वर्जेंट विद स्टॉक मार्केट डायनामिक्स? अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा टू बिकम, obviously not an expert, but as a common man to be knowledgeable enough to start investing in the stock market? I think if you have a background in economics and accounting, accounting इसलिए क्योंकि accounting business की language है. ठीक है. तो I think वो बहुत ज़्यादा help करती है financial statements पढ़ने में.
आई थिंक अगर आपका वो बैकग्राउंड है तो मे बी 3 to 6 months of study will get you there. By study, you mean what? Reading newspapers, reading what? Annual reports? जी, reading newspapers, reading annual reports, brokerage houses की reports भी आ रही होती हैं, research reports. So those are also a good source of information sometimes. फिर publications basically State Bank भी दे रहा होता है economy पे. So there's lots of like material out there. There's lots of materials out there, and आपकी I think one other very good source which I feel is underrated is that अगर let's say आप किसी भी सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो टू फाइंड द राइट पीपल हु वर्क इन दैट सेक्टर, दैट इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज दे आर एक्चुअली, वो तो काम कर रहे हैं उस सेक्टर में, दे अंडरस्टैंड कि जी इसमें काम कैसे होता है, इसमें पैसे कैसे बनते हैं, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिटर्न्स क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. तो वो एक बहुत ज़्यादा मैं भी अभी यही कर रहा हूँ एक्चुअली. अच्छी सोर्स है. हाँ, यू आई मीन एब्सोल्युटली, यू नो, सो दैट आई थिंक इज़ द best way to get a lot of good information. And that's one, I think that's one thing that people जो अक्सर overlook कर जाते हैं. Yeah. उसको underestimate करते हैं. हाँ बिल्कुल. I think आपको अपनी network को tap करना चाहिए, अपने दोस्तों के दोस्तों को, you know, use your network to basically do the research. Because yes, you know, the desktop research जो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे होंगे वो बहुत important है to get the basic building blocks. Lekin it only takes you that far, because that doesn't tell you exactly कि जी इस कंपनी में हो क्या रहा है अंदर. अच्छा, मुझे अब now I really want to ask you about your, so you worked for what 13 odd years before you actually started your own company. 2005 I started working, and yes, we started in 2019. So yeah, 14 years roughly. So how did you realize that this is what you wanted to do, and how did you actually do it? Actually, I think for me, the realization that I wanted to become an entrepreneur, actually let me go a little further back. I think for me, becoming an entrepreneur was never about just, let's say, making a lot of money. That was not the idea. The idea was that I think within the first 5 years of my working life, मुझे ये realization हो गया था कि I operate in a certain way, I am wired a certain way mentally, और इसके बावजूद कि I tried to change myself in certain ways, वो मेरे लिए आसान नहीं था. And when I looked as an employee, and when I looked around me, तो मुझे realize हुआ कि शायद ये चीज़ जो है ये this is true for most people, not just for me. So for me, the thought initially of becoming an entrepreneur actually came because I felt that that is the right route, जिसमें मैं अपनी potential को और अपनी strengths को और जो मुझे करना है लाइफ में, जो मुझे लगता है कि I'll be good at and I enjoy doing, वो मैं कर सकूँ. जो मे बी जॉब में मुश्किल होता है बिकॉज आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है एंड यू काइंड ऑफ हैव टू डू दैट. ऐसा नहीं है कि आप अपने से ही अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं. सही. सो मेरे लिए तो ये था कि, एंड आई थिंक दिस वाज अगेन एज आई सेड मे बी 2010 आई रियलाइज दिस कि जी दिस इज़ व्हाई आई वांट टू यू नो बी एन एंटरप्रेन्योर एंड हैव माय ओन बिजनेस, नॉट फॉर रीजंस के ग्रैंड प्लान्स के जी बहुत. So मतलब in your 20s you realized before you hit 30 you realized कि I'm a little different, I think a little differently, or entrepreneurship is the answer to perhaps being more independent and doing what I like. 100%. I think you've put it very well. यही था. और over time as I studied and researched more, I realized कि इस पे research भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है कि people say कि as early as 5 years old एक बच्चे की जो mental wiring होती है वो set हो जाती है. और कुछ लोग कहते हैं कि ये 7 साल पे होती है, कुछ कहते हैं कि जी 10 साल तक हो जाती है. तो दिस इज़ क्वाइट क्लियर. दैट्स नॉट टू से कि आप फिक्स ही हो जाते हो उसमें, बट एक जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके वो सेट हो जाते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्कूल सिस्टम है और जो एजुकेशनल सिस्टम है और आई थिंक जो पेरेंटिंग सिस्टम भी है वो गियर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए कि वो एक बच्चे की नेचुरल स्ट्रेंथ्स को हार्नेस करे. वो गियर्ड है टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन. अब इसमें ये होता है कि जब आप जॉब में जाते हैं तो यू रियलाइज़ कि जी मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ बुरा हूँ, बट देन जॉब में देयर आर मल्टीपल प्रायोरिटीज़. आपको
यू वांट कि जी मैं पैसे भी मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, आप प्रेस्टीज को भी मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज़ योर कॉलिंग या जो आपको पैशन है या जिस चीज़ में आप अच्छे हैं. सो आई थिंक काइंड ऑफ व्हाट आई रियलाइज्ड, एंड आई रिमेंबर रीडिंग एक इन्वेस्टर की ही बल्कि डिस्क्रिप्शन थी, और उसने ये समझाया था कि जी देखिए आपकी एक इंटरनल अलाइनमेंट होता है हर इंसान का, जिसको मैंने आई रेफर टू एज वायरिंग, में आपकी जो वायरिंग है, और फिर एक एक्सटर्नल आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है जी, जो आपकी बेसिकली जॉब है और जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, सो जब इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइन होते हैं, वो रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड दोज आर द बेसिस फॉर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ. और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इन कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो फिर शायद आपकी लाइफ में सक्सेस आपको और हैप्पीनेस नहीं मिले, शायद आपके पैसे तब भी बन जाए, maybe you do well in a job and you do well, but you don't have the internal satisfaction which you should have. So I think that is a concept that really appealed to me, कि जी internal और external alignment होना चाहिए. And I kind of said कि I'll take it upon myself कि मैं ये अपने लिए तो खुद करूँगा. तो कैसे किया वो कैसे? So it took a while, as I said. 2010 में ये सोच आई थी. 2019 में my partner and I embarked on our entrepreneurial journey. So it took 9 years, and zahir hai, there are priorities. You have to, you have to be financially also able to sort of be able to get on your entrepreneurial journey, and I think I used that time basically to set myself up कि ये goal है और इसको achieve करने के लिए I need to get there. So for 9 years you were working as an employee, but at the back of your mind was ये था कि अच्छा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं I'll start my own thing. ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था. And I think ये था कि in the interim I was saving, I was investing my own money, so that I would be able to take that risk as well. And it was not a set plan कि जी 9 साल ही होने. It would be a as is basis कि when you are able to do it. So हाँ, तो I think उसमें ये था कि from very early on I became almost desperate कि जी एक concept होती है, it's called financial freedom. So I became desperate for that, and it took me a while to. I would say that I'm actually still not financially free, but it took me a while to even get halfway there. And financial freedom ये होता है कि you have the finances कि आप जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो आप कर सकें. You're not dependent on a job or an other source of income for you to be able to kind of pursue your dreams. So a lot of people who I have read about, and I see them as mentors in that way, I found that they sought financial freedom in their life. कि हमारे पास ज़िंदगी में इतने पैसे हों, ये पैसे इसलिए नहीं है कि बहुत बड़े घर लेने हैं, बहुत गाड़ियाँ लेनी है, बहुत खर्चे करने हैं. ये पैसे इसलिए हैं कि हमारे पास ability हो to do what we want, to pursue our passions and dreams and what we are good at. So I think it's a very useful concept to have. And I think job में ये concept थोड़ी सी loose भी हो जाती है, because job में आप जिस तरह से आपकी पे बढ़ती रहती है, आप उस तरह से अपने खर्चे भी बढ़ाते रहते हो. तो at the end result is कि you actually, if you're a successful person in a job, you have a very good lifestyle, you may not have a lot of saving. Or a lot of time also. Yeah, or a lot of time, absolutely, 100%. So financial freedom pursue करना चाहिए, rather than just maybe higher pay or in that way. So I think I found that concept very useful in terms of preparing myself and planning for my own entrepreneurial journey. So you're talking about how, like, the various ways of figuring it out. So you were talking about the hedgehog model, for example. Could you just talk a bit more about that? हाँ, hedgehog model है या एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकागाई की, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया था when I read these concepts. तो hedgehog में ये है कि hedgehog concept basically comes from this book by a very famous author called Jim Collins. The book is called Good to Great. It's about companies that become great. And वो ये कहते हैं कि जो ये companies हैं, ये basically हर great company ने एक hedgehog कॉन्सेप्ट को फॉलो किया हुआ होता है.
hedgehog concept ये है कि आप imagine 3 circles. एक सर्कल है आपका पैशन, कि what are you very passionate about. एक सर्कल है आपकी कॉम्पिटेंस, कि जी आप दुनिया में सबसे अच्छे या बहुत ज़्यादा अच्छे किस चीज़ में हैं. और तीसरा सर्कल है आपका इकोनॉमिक इंजन, कि जी आपके पैसे कैसे बनेंगे, या यू नो हाउ विल यू मेक मनी. एंड हेजॉग कॉन्सेप्ट ये कहती है कि, और या इकागाई वाली कॉन्सेप्ट, कि इसके इंटरसेक्शन पे काम किया जाए. जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हो, तीनों चीज़ों के मौजूद हों और उसका जो एक स्वीट स्पॉट है उसके बीच में आप काम करें, या वो चीज़ है विच यू शुड परसू. एंड आई फाउंड दैट कॉन्सेप्ट वेरी यूजफुल बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि हम ये तीनों सर्कल्स को एज इंडिपेंडेंट देख रहे होते हैं. तो या तो आप कहते हैं कि जी पैशन को फॉलो कर लें, तो आपको लगता है कि जी पैशन में पैसे नहीं होंगे, या पैशन में आपकी जिस चीज़ में आप अच्छे हैं वो शायद ना हो, या आप कहते हैं कि जी जिस काम में आप अच्छे हैं, कॉम्पिटेंस है, वो कर लें, पैशन को भूल जाएं और पैसे को भी कम वेटेज दें. या यू गो लाइक कि जी ठीक है, आई विल प्रायोरिटाइज मनी ओवर एवरीथिंग, तो वो प्रायोरिटी बन जाती है और पैशन और आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो बैक सीट ले लेती है. इसमें ये कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इकागाई की या हेजॉग की, इसको इस इंटरसेक्शन पे आना या समझना कि जी ये एक इंडिविजुअल के लिए या कंपनी के लिए वो क्या है, इट इज़ अ जर्नी. इट इज़ नॉट समथिंग कि वन फाइन डे यू विल वेक अप एंड आप एक्सरसाइज करेंगे पेपर निकाल के और आप 3 सर्कल्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से डेफिनेटली रिफ्लेक्शन हेल्प्स, कि जी यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, कि जी एकेडमिकली व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट डू आई एंजॉय, प्रोफेशनली व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट डू आई एंजॉय, एंड यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, कि जी किस चीज़ में व्हाट प्रोफेशन ऑफर्स व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिन्यूमरेशन. तो वो इनपुट्स आपकी आ रही होती हैं, बट आई थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू विल रियलाइज कि जी ये है जिसमें ये क्राइटेरिया जाके बैठ जाते हैं. देन यू कैन काइंड ऑफ pursue it. Maybe you are wrong, but you can then course correct as well. But I think वो framework extremely important है कि ये तीनों चीज़ें होनी है, because अगर इसमें से कोई ingredient missing होगा तो शायद आपके लिए वो चीज़ हमेशा ही lacking रहेगी. So I think I found that concept very useful when I read it, and I find it useful even when we're researching companies, कि जी इनकी hedgehog है या नहीं है, या because companies are also run by individuals. तो कंपनीज के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, दे आर नॉट पैशनेट अबाउट इट बट दे आर स्टिल डूइंग वेल, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है. पीपल डू वेल. यहाँ पे मतलब आप अगर लेट्स से you're in the right sector, तो आपके पैसे बन सकते हैं, you can do a good job, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी आई थिंक ज़्यादा तब आती है जब जो कंपनी को रन कर रहा है उसका पैशन भी उसमें हो. तो वो जो रियली आई वुड से जो अमेजिंग आउटकम्स आती हैं, या will be that really disproportionate returns in life and in the stock market as well, they come from when you have this hedgehog. And if you don't have this hedgehog, तो often times you're totally lost as well. फिर आप एक चीज़ ट्राई कर रहे होते हो, वो नहीं चलती, तो फिर दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे होते हो. That makes a lot of sense. So you don't have a framework. So with this framework, did you also have a mentor, like somebody who sort of guided you, or a bunch of mentors who helped you out? I've definitely had mentors in terms of my previous bosses as well, some of them. I would say though that what I decided was that my mentors are not real life mentors. They are found in books. Okay. So for me, Warren Buffett is a big mentor. His partner Charlie Munger is probably an even bigger mentor for me. And I can name many other such people who I encountered in books, and I've kind of seen them as mentors. And I think वो बहुत ज़्यादा important है, because in fact I would like to just maybe give a quote from Warren Buffett, and it's a very interesting quote. उनका ये, he said this once and he's like, tell me your role models and I'll tell you who you are. Okay. You know, कि आप कौन से, आप किसको look up करते हो, and then that tells him about you basically, कि who you are, who you aspire to be in that way. So I think
having role models, choosing the right role models is extremely important. We all know that, starting from a very young age, we're role model as parents, we're role models as in our workplace, so on and so forth, as friends as well. And I found that rather than be restricted कि जी role models वो हों जिन लोगों को आप अपनी physical life में encounter कर सकें, so there's a big world out there in the form of books, podcasts, videos, everything. So depending on what your natural inclination is, जो आपकी passion, inclination, सब चीज़ें हैं, you will find the best of the best out there, with their public thoughts, books के form में या interviews के form में. And अगर आप उनको रोल मॉडल बना लेते हैं तो आई थिंक वो आपको एक रोड मैप देता है ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू मेक डिसीजंस. इफ यू आस्क मी वेरी पर्सनली कि विदाउट हैविंग वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर एज रोल मॉडल्स, माई लाइफ वुड बी अ लॉट पोरर इन मोर वेज देन वन. So yeah, I would highly recommend seeking out role models, but in an expanded sense of the word, not ये कि जो लोग आपको physically ही मिलते हो. I have this question before we conclude, Farrukh. A lot of young people, young smart people are now immigrating out of Pakistan. They're moving to Canada, North America, Australia, etc. What is your sort of reading on this, and do you think how alarming of a trend is this? देखिए, alarming तो I think है. In the short term, if you look at it from an economic perspective, आप ये थोड़ा सा ये होता है लोगों को कि जी चले रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी मायोपिक शॉर्ट टर्म व्यू, बिकॉज अगर दिस इज़ द इफ इट्स अ ब्रेन ड्रेन एंड इट इज़ अ ब्रेन ड्रेन, तो फिर आपके जो बेस्ट लोग हैं वो बेसिकली मुल्क से बाहर हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स हार्ड टू ब्लेम देम फॉर मेकिंग दैट डिसीजन एज वेल. So yes, to answer your question, I think it's extremely alarming, and it is something where anybody who's serious about fixing this country's issues, अगर ये मसले हल होने हैं पाकिस्तान के, तो brain drain का मसला आपने हल करना पड़ेगा. Now the thing is, that doesn't mean people shouldn't go abroad. अगर आप sort of China को study करें, तो इनके लोग जो हैं, they've gone abroad, बहुत ज़्यादा जाते हैं to study, to learn from other cultures, more developed countries. But then they come back because they realize that जो भी उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, the opportunity set at home is bigger than abroad to apply that. And is that the case for Pakistan also? Hard to say right now. I think the opportunity set, the unrealized opportunity set is huge, because ज़ाहिर है बिल्कुल ही आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, and lot of things need to be done सारे सेक्टर्स में, but certain basic building blocks have to be there for you to get to that path. So I think people जो यहाँ से जाते हैं वो basically they are also doing it with a heavy heart. People have families here, people have their loved ones here, people are comfortable, they have their networks here. But अगर आपको लगता है कि जी opportunity आपके लिए, आपके बच्चों के लिए restrict हुई हुई है, so then you will kind of take that path. My opinion is that one way to think of this is that entrepreneurship is that path forward. Because अगर आप यहाँ पे let's say job का route लेते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद बहुत ज़्यादा ही restrictive है, and you will always feel that I'm much better off अगर मैं ये काम बाहर कर रहा हूँ. And I think जो opportunity set exist करता है वो maybe entrepreneurship में ज़्यादा है, और आपको शायद immediately ना दिख रहा हो, but ये कि it is there for sure. So I think more and more people are and should be thinking on this path. My only sort of caveat to entrepreneurship, and this is a personal opinion, so I'm not trying to say कि ये कोई गलत या सही बात है, is कि doing a job, whether it's for 3 years, 5 years, 10 years, before you embark on your own business, I think in the long term is the right thing to do. Because जो discipline, जो एक sense of discovery आपको चाहिए होती है, जो एक networks आपको चाहिए होते हैं, वो आपने, I think they're easier to form when you're working at an organization.
and you have people who have more experience than you, और आप उसमें form कर रहे होते हैं, and वो चीज़ पे शायद आपको ज़्यादा clarity देती है with regards to maybe what your hedgehog, your ikigai, your calling, your passion can be, and then you can go and pursue that with the entrepreneurial path. It gives you the luxury of discovering yourself. It gives you the luxury, it gives you the tools as well for discovering yourself. If you choose entrepreneurship straight out of college, potentially someone could have already know what they want to do. So phir unke liye to I think that's good. But for someone who doesn't, then maybe you want to figure that out as well. You want to figure yourself out. You want to have the discipline. You want to have a network that you've developed, and then maybe take the path to entrepreneurship. ये ना हो कि आप बिल्कुल ही शुरू से start कर रहे हो, तो it can be very chaotic as well. And I think you want to avoid that. So some degree of stability in your career at the beginning, I think, is more important than creativity. And I think over time, using that stability, you get more and more into the the creative side of things as well. So that's kind of been my personal reading of it. That's also been my personal journey. Yeah. So yeah. Thank you, Farrukh, for being on Kaam Kahani. It was great talking to you, and thank you for sharing your journey. It was an absolute pleasure, Aris, and I'm glad you're doing this, and I hope that young people can find inspiration from some of our career journeys of the people who you bring onto this podcast, and hopefully that helps them to discover themselves and move upwards and onwards. So thank you for watching Kaam Kahani. Till we meet next time with another Kaam Kahani. Take care.